Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 7. Today we'll continue chapter 2 of Civics, working of a government for revision of half yearly. So let's continue this chapter with introduction. So a government is divided into 3 levels in order to have control over a large number of people. So because in our country like India, there is a large number of people, there is a large population, and a small group or a particular one or two group cannot lead the whole country. So the government is divided into 3 levels, 3 stages. The first one is the central, the second one is the state, and the third one is the local. So the government is divided into 3 levels. The first one is central level, the second one is state level, and the third one is local level. The levels of government were divided to keep a check on the internal and external conflicts between the people of same or different communities. And these 3 levels are divided to keep a check, to keep a proper control on the internal and external conflicts. अगर किसी भी तरीके का किसी में मतभेद होता है, लोगों के बीच में, यानी कम्युनिटी के बीच में किसी भी चीज़ को लेके उस चीज़ों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है. एंड we have already discussed about the working of government at the local level in the detail. Now we shall understand that working of the state government. So in this chapter we'll learn the working of a state government. At the end of this chapter you'll be able to answer questions that how a state government is elected or what is the process of elections. कि state government राज्य सरकार कैसे काम करती है, वो कैसे elect होती है, and what is the process of elections. election के क्या process होते हैं, चुनाव के क्या प्रक्रिया होती है. State government. A state government is responsible to look after the matters related to a state. तो state government राज्य सरकार is responsible to look after the matters related to state. तो वो किसके लिए responsible होती है, जिम्मेदार होती है राज्य के, स्टेट लेवल के जो भी मैटर्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. दे इंक्लूड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट लेवल and providing health benefits at the state level, irrigation facilities at the state level, electricity, drinking water and transport facilities, and much more to a state. Now, universal adult franchise. This we learn in our previous chapters also, and we have repeatedly discussed that a democratic government provides a feature of universal adult franchise. So, universal adult franchise allow the citizens of country who are of 18 years or above 18 years, whether male, female or other gender, to cast their vote in the elections and choose their representatives. So universal adult franchise to allow the citizens of country to appear in the elections in order to vote or to cast their vote for their preferred or their favorite representative or leader. As its name suggests, it is universal right. ऐसे नाम बता रहा है यूनिवर्सल, मतलब ये पूरे यूनिवर्स में आप 18 या 18 साल से अबव के हैं तो आपको अधिकार है, सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं, पूरे यूनिवर्स में आपको अधिकार है अपना वोट कास्ट करने का, irrespective of your caste, color, creed, religion, educational qualification, designation, sex, etc. तो चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आपका कैसा भी कलर है, क्रीड है, रिलीजन, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, सेक्स, whatever you belong to, you are, if you are of 18 years or above, you are allowed to cast your vote. Now in India, every citizen of age 18 years or above is allowed to vote.
Second topic is elections. The Election Commission of India is responsible for conducting elections. Elections are very important process. Elections are the process through which we can choose the representative whoever we want. So it ensure Election Commission of India, तो इलेक्शन कराने की, चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की. एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स दैट द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं, फेयर तरीके से कराए जाएं, सो दैट पीपल फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट टू वोट. And it was set up, what Election Commission of India was set up in the year 1950 to manage the elections in Lok Sabha and Rajya Sabha. State Legislative Assembly and State Legislative Council, विधान सभा एंड विधान परिषद, ये दो हमारे हाउसेस होते हैं स्टेट लेवल पे. एंड द लोकल गवर्नमेंट, the State Legislative Assembly, the State Legislative Council, the local government position, and the offices of President and Vice President of the country. All the members of this unit are elected by the President of India. So the members of Election Commission of India are elected by the President of India. Now, types of elections in our country. So in India, elections at various levels are held for different categories of representatives. So first one is members of the parliament in Lok Sabha. तो elections कई स्तर पे होते हैं हमारे यहाँ, कई कैटेगरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए होते हैं और कई स्तर पे होते हैं. तो पहला है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन लोक सभा, उनके लिए इलेक्शंस होते हैं. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन राज्य सभा एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम विधानसभा भी कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम विधान परिषद कहते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकल पंचायत एंड रिप्लेसमेंट मेंबर ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव हु डाइज और resigns. Process of election. Let us understand the process of elections in India by taking the example of लोक सभा elections. तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे लोकसभा इलेक्शंस का और उससे हम जानेंगे कि इलेक्शन प्रोसेस कैसे कंडक्ट होता है. द पोलिंग इज़ हेल्ड बिटवीन 7 to 6 PM. तो सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक इलेक्शन का जो टाइमिंग होता है वो होता है. एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंक्लूडेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जैसे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, इनको असाइन किया जाता है, चार्ज दिया जाता है ना, इलेक्शन का. ऑन वेरियस वोटिंग साइट्स, अलग अलग वोटिंग केंद्र पे, वोटिंग साइट्स पे. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, अब क्या है, EVM से इलेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन होता है. आर सेट अप एंड द सिटीजन्स आर अलाउड टू कास्ट देयर वोट. EVM सेटअप किए जाते हैं और जो सिटीजन्स होते हैं उनको वोट कास्ट करने को अलाउ किया जाता है. आफ्टर कास्टिंग द वोट्स, द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, वोट देने के बाद जो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर होती है उस पर एक इंक से, जिसको इनडेलिबल इंक होती है, जो कि तुरंत उसको आप मिटा नहीं सकते हैं, कुछ टाइम के बाद ही मिटती है, वो लगाई जाती है, उससे मार्क किया जाता है, जिससे पता चल सके कि एक इंसान एक समय में, एक इंसान एक बार ही वोट दे. मीन्स इंश्योर दैट दे वोट ओनली वन टाइम. द सिटीजन्स कैन वोट ओनली वन टाइम. Now the process of election includes the following steps. The Election Commission of India releases a statement regarding the dates of elections. तो Election Commission of India पहले एक डेट रिलीज़ करता है जिसमें सारी डेट्स दी होती हैं, कब इलेक्शन होंगे, कब उसके रिजल्ट आएंगे. सो द रूल्स टू बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू आउट द प्रोसेस एंड डेट्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट. एंड द कंस्टिट्यूएंसी, कंस्टिट्यूएंसी क्या होती है, चुनावी क्षेत्र, मतलब जिस भी पर्टिकुलर एरिया से आप चुनाव लड़ रहे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन म्यूचुअल डिस्कशंस, वहाँ से हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करती है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए. एंड फिल अप फॉर देयर नॉमिनेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस. द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कंस्टिट्यूएंसीज आर रिव्यूड by the returning officer and the list of only the eligible ones are released.
डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं हर एक कंस्टिट्यूएंसी के, फिर उस पर रिटर्निंग ऑफिसर अपना रिव्यू देते हैं और जो भी सिलेक्टेड या एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको उनकी जो लिस्ट होती है वो दे दी जाती है, दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस. यूनिक एंड अप्रोप्रिएट सिम्बल्स आर असाइंड, पर्टिकुलर सिम्बल्स आर असाइंड टू द पोलिटिकल पार्टीज and printed on voting machines also, so people or citizens can cast their vote. Voters cast their vote on the declared date and then the EVMs are sealed and sent to the counting site. The votes are counted on the date fixed by the commission, and after this process the returning officer declares the result on fixed date. Now our next one topic is the party system. This topic will continue in our next class, and in our next class I'll give the answers of homework questions, long and short questions of this chapter. Read the chapter properly for proper revision. Don't forget to give your attendance in the comment section. Write down your name, class and section. Thank you, class.